Hello. Am I audible and visible to both of you people? Let me know. Let me know, all of you people, whether I am audible and visible. Quickly, guys, do hit the like button and share the session with other people so that everyone can enjoy this super duper session. In fact, the final session for the GATE 2022 most expected question series that is currently running over here. This is the final session over here. Actually, I want all of you people, and this is the combined weightage of this particular topics is going to be around 10 to 12 marks. If I combine all those topics, structure, BMC and CPM, it's gonna be around 10 to 12. Okay, so let's see that who is going to give the correct answers to me, right? The first question is up on your screen. Let's see, so that who is going to give the correct answer. Hello Shanawaz, hello Aditya, hello Jay Ram Chaudhary, hello Gopala Guru. Okay, yes, I'm fine. Okay, don't just come here to say hi. Okay, I wish all of you people watch this session. It's going to be helpful for all of you, all the GATE 2022 aspirants for sure. Okay, so please guys, let me know in the live chat section that what is the correct answer to me for this particular question. जल्दी सर मुझे एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दे दो क्विकली. The degree of freedom of the frame shown below is neglecting the axial deformation. So basically what is asked in the question, sir? क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? पूछा क्या गया है सर? सर पूछा गया है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम. इन अदर वर्ड्स बेसिकली काइनेटिक इंडिटरमिनेसी इज आस्क्ड. दे आर आस्किंग नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन. What do you mean by neglecting axial deformation? Neglecting axial deformation means that you are considering the members to be rigid, axially rigid. आप मान के चल रहे हो. हेलो सुमित, हेलो सूरज, हेलो विश्व, आई एम फाइन. या तो आपको मैंने टेक्निक सिखाया था, राइट? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अ टेक्निक. इफ यू नो द टेक्निक, दिस क्वेश्चन इज जस्ट नथिंग, राइट? चलिए टेक्निक देखते हैं. जो लोग मेरे 10 सेकेंड्स वाला टेक्निक जानते हैं, दोज पीपल, 0 3 7 10 13 14 15, यहां पे 16, बट सिंस दो मेंबर आ रहा है तो 17. That's the very simple story actually. So basically it is 17. 17 is the kinematic indeterminacy of this if I am considering all the axial deformations. That means I am considering the members to be non-rigid. If I am considering the members to be rigid axially, तो उतने सारे degree of freedom घट जाएगा. अगर मैं members को rigid मानूं, that means the members are not going to actually have any degree of freedom along their axis. कितने सारे member है सर? सर 1 2 3 4 5 6 7 और सर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 members are there total basically, right? तो it is 17 minus 8. The correct answer is option A. Let me know in the right section sir कितने सारे लोग सही जवाब दे चुके हैं मुझे. So ये टेक्निक क्या है सर? 0. Why 0? क्यों 0 है सर ये? Why it is 0 सर? क्यों 0 है ये? The reason सर 0 है क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड एंड में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं थी. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर, राइट? यहां पे कुछ भी नहीं है. ये 3 यहां पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट देखो. कोई भी स्ट्रक्चर को अगर आप इंटरनली तोड़ते हो, राइट, बेसिकली, राइट अंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे आपको 3 दिखेगा. बाय द वे बोथ द गाइस, यू नो, लेट मी जस्ट अनाउंस वन पर्टिकुलर थिंग. टुमारो, from tomorrow morning actually and evening, right, full formula revision, I guess all of you people know, and all the PDFs will be uploaded in my telegram channel. तो जो लोग अभी तक मेरे telegram channel को सब्सक्राइब नहीं कर चुके, भैया क्या कर रहे हो? जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दो. ओके, तो टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक कुछ ही देर में आपको शेयर कर दे रहा हूं, सो दैट यू नो एवरीबॉडी कैन एक्चुअली एंजॉय द सेशंस. और टेलीग्राम चैनल में आप लोग सर शामिल हो जा सको. 1 सेकेंड प्लीज. ओके, 1 सेकेंड. चलो, तो ये जो टेक्निक है एक्चुअली देखो, वहां ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स ओवर हियर. अच्छा, तो सर आप देख पा रहे हो उसके बाद से दैट यू नो दिस इज 3, दिस 7. यहां पे 7 क्यों हुआ सर? 3 तो ऑटोमेटिकली आ रहा है.
along with that one extra is there. क्यों? Because it is an internal roller type of thing actually, right? Internal slider type of thing. That's why basically यहाँ पे दो मेंबर आके ज्वाइन हो रहा है, एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहां पे देखो, यहां पे आप बोल रहे हो सर यहां पे तो हिंज है, तो फिर आपने 2 क्यों लिया? बिकॉज सर इफ देर इज वन हिंज देर इज ओनली वन मेंबर सर. ओके, एक्स्ट्रा फायर शुड नॉट बी शेयर. ओके ओके फाइन फाइन. दिस इज 15. हेलो देवरीना, वेरी गुड इवनिंग. यहां पे वन ऐड हुआ है, देखो क्यों? बिकॉज देर इज ओनली वन मेंबर, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहां पे सर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 मेंबर्स, 2 डिफरेंट मेंबर्स अंडर सर्टेन एंगल बेसिकली. ओके सर, दिस इज 17 इसलिए. ठीक है, 0 3 7 10 13 14 15 17 16 होता है प्लस 1 क्योंकि 2 मेंबर है. 3 मेंबर होता तो प्लस 2 होता, 4 मेंबर होता तो प्लस 3 होता, n नंबर ऑफ मेंबर होता तो n-1 ऐड होता. राइट, ये 17 है. नाउ दे आर आस्किंग नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन. मतलब सर नंबर ऑफ मेंबर को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर है, माइनस कर दो 8. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप ऑन योर स्क्रीन. दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इंटरमिनेसी. फटाफट से यार एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो. एंड इफ यू वांट न्यू टू माय चैनल, सब्सक्रिप्शन वुड बी फेनोमेनल. ओनली प्लीज गाइज डेफिनेटली टू हिट द लाइक बटन. सर लाइक बटन को दबा दो क्योंकि आज सर हम लास्ट सेशन में हैं. ये जो एफर्ट इतने दिन से कर रहे हैं बेसिकली आप सभी के ऊपर, उन सभी का आज है बेसिकली द लास्ट सेशन. दैट इज योर गेट 2022 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का. राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप ऑन योर स्क्रीन विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑन योर, क्या है सर आपके स्टैटिक इंटरमिनेसी. ये क्या हो गया? ओके, 1 सेकेंड सर. कल सर जो है सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन है. फुल फॉर्मूला रिवीजन सुबह भी और शाम को भी. ओके, तो इसका भी टेक्निक आपको पता है सर. व्हाट इज अ टेक्निक सर? डीएसी प्लस डीएसआई टेक्निक. राइट, दैट इज द स्टैटिक इंटरमिनेसी का निकालने का जो टेक्निक है सर, मैंने आपको बताया था. दैट इज सिंपली द डीएसी प्लस डीएसआई टेक्निक. डीएसी टेक्निक क्या कहता है सर? व्हाट डज इट से? सर डीएसी मतलब एक्सटर्नल इंटरमिनेसी. कितना होता है सर? सर इट इज r-3. सर आर कितना है सर? सर आर इज बेसिकली योर 3 2 2 1. ठीक है, तो 3 + 2 + 2 + 1 -3, ये है आपके डीएसी. दैट इज योर 5. राइट, नो प्रॉब्लम सर. ओके, टॉकिंग अबाउट सर डीएसआई. ओके, टॉकिंग अबाउट सर डीएसआई. डीएसआई का मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला बताया था. कैन यू प्लीज टेल मी सर व्हाट इज अ फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज बेसिकली 3 × नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप माइनस द हिंज इफेक्ट. माइनस द हिंज इफेक्ट. जो लोग मेरे क्लास कर चुके हैं 10 सेकंड्स में स्टैटिक इंटरमिनेसी काइनेटिक इंटरमिनेसी कैसे निकालते हैं, वहां पे डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. ये हाउ मेनी क्लोज लूप्स आर देयर सर? 1 2 3 4 5 तो मुझे सर दिख रहा है, ये छठा भी दिख रहा है. सो 3 × 6 माइनस सर, माइनस क्या होगा सर? लेट्स सी दैट. हिंज, हिंज कुछ दिख रहा है क्या सर? यस, हिंज है सर. ये देखो एक इंटरनल स्लाइडर. राइट, इसके लिए कितना कम होगा हिंज इफेक्ट के लिए? सर यहां पे 2 मेंबर आके ज्वाइन हो रहा है तो हिंज इफेक्ट में 2 - 1. ओके, प्लस ये देखो सर और एक इंटरनल हिंज 1 2, 2 मेंबर आके ज्वाइन हो रहा है तो 2 - 1, प्लस इंटरनल स्लाइडर एक 2 मेंबर आके ज्वाइन हो रहा है 2 - 1. पहले सर माइनस है सबके. राइट, प्लस 1 मोर इंटरनल हिंज 1 2 3 4, 4 मेंबर ज्वाइनिंग तो 4 - 1. तो it is coming as 18 - 1 1 1 3 6. That is your 12. Right sir, no problem. So DAC is 5, DSI is 12. What is the degree of static interminacy? It is your 17. The correct option is option B. Let me know in the live chat section whether you are understanding it, yes or no. जल्दी से जल्दी एक बार like और share कर देना इस session को so that everybody can enjoy this session in all that other Telegram groups. Stay tuned till the end of the session for the very beneficial session for all of you people. Let me know in the live chat section by the way कि इसका जवाब क्या होगा. क्वेश्चन आपके ऊपर, द फोर्स इन द मेंबर BC. BC बाय द वे कौन सा मेंबर है? चलिए एक बार जूम करके देख लेते हैं. दिस इज द मेंबर बेसिकली, दिस इंक्लाइंड मेंबर इज बेसिकली योर BC. तो बोल रहा है कि BC में कितना फोर्स आ रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो सबसे पहले से शुरू करते हैं
दैट कोई भी अगर इस तरीके से का स्ट्रेस में हम करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज योर टू फाइंड आउट द रिएक्शंस, राइट सर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ओनली वर्टिकल लोड्स आर गिवन, तो ऑब्वियसली सर वर्टिकल रिएक्शन ही आएगा सर। तो आर ए प्लस आर बी, ऊपर से भी सर दो ही लोड आ रहा है, 2W समेशन वी एफ वाई जीरो कर रहा हूं मैं, राइट। दिस इज समेशन एफ वाई जीरो सर, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर मोमेंट। मोमेंट लेते हैं सर, राइट। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव बाय द वे सर, अपना ऑब्जेक्टिव मत भूलना। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव सर? माय ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू कैलकुलेट दिस फोर्स, राइट। So if I can calculate somehow what is the reaction at this joint RB, मतलब का जो भी वैल्यू है सर, what is the RB, what is the horizontal reaction, तो सर हम बिल्कुल जो नॉर्मल हम जॉइंट एनालिसिस करते, we will do the joint analysis and we will calculate what is the BC. नो प्रॉब्लम सर, यही हम करने वाले, राइट। ओके, नयन हैज ऑलरेडी आंसर द ऑप्शन इज बी। लेट्स सी व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। समेशन ए में जीरो होगा सर, ए के अबाउट में मोमेंट ले रहे हैं। वाई सर? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द आरबी। आरबी और एच, क्या बोलते इसको, एच बी बोल सकते हो, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, व्हाट एवर यू से इट एज। ओके, so that will be useful. Yes, I'm trying my best actually, Pavitra. Okay, whenever you are going to feel anything uncomfortable, actually please do stop me at that point. I will definitely explain to you in English completely, no problem. Okay, I'm trying my best actually to communicate in English only, but sometimes what happens if somebody replies in Hindi, so the flow continues. Okay, so please don't mind. So this is your RB into, what is the distance sir? 2L, right? दिख रहा है आपको 2L. What are the other forces? This is anti-clockwise, right? RB into 2L minus W into L, right? Okay. Any other force? Minus W into L clockwise. This is also going to put sir minus W into L. Okay, sir, no problem. This is also clockwise, right? This is also clockwise, but this is anti-clockwise, right? RB into 2L anti. This is clock. This is clock. All are remaining are clock, right? All the remaining are clocks. RB into 2L, this is the only anti-clockwise, right? Other all are clockwise reactions, right? Let me know in the lecture section once. I think all are the this particular thing, right? This is also W into 2L, W into 2L. All are like this. So RB is 4WL by 2L. So it is 2W, right? RB is equal to 2W and it is upward because I have considered it as upward. Any confusion, sir? No. Okay. So mostly people are answering C right now. Also people have started answering D. Okay, dekhte. Now sir, since there is one more hinge over there, right? So here also the moment is going to be zero. What's the purpose now? Now sir, your purpose is to calculate HB, right? If you are able to calculate both these things, your job is done, right? What is this HB? तो HB का असर देखने के लिए, to calculate the effect of HB, you need such a point where HB is actually giving some moment. You cannot take A because at A HB is not giving any moment, right? So that's why I have taken C. चलो सर लो, तो सर समेशन से MC is equal to 0. तो सर कोई भी ले लो सर, दिस इज से HB into L clockwise आ रहा है, HB into L clockwise, right? HB into L, okay. और कौन सा फोर्स है सर HB में सर? RB into L anti, RB into L sir anti, RB into L anti. This W is there sir, ये वाला W है सर, कितना होगा सर ये W? This W is also going to be W into L, इस साइड में clockwise होगा, yeah. So RB तो you have already calculated 2W. Okay, so HB is equal to 2W minus W, that is W only, no problem sir. Okay, directly, yes, you can also use sir sine rule, of course sir, you can do it, of course you can do it. That would be also very easy, no problem sir, very good. Okay sir, so this is your W. This is the very general method I'm telling you, actually very generic method that you can use anywhere. Now sir, joint B, I am watching summation FH0, right? Summation FX0, summation FX0 if I do sir, this is BC. तो BC का सर which component? This is L, so this 45 degree, right? So you are understanding this. So this HB is being balanced by FBC cos 45, right? तो FBC
is nothing but HB by cos 45. HB you have calculated W by 1 by root 2, so it's root 2 W. The correct answer is option B. Very direct, I know done, very conventional way I have followed. I did not do anything special. I have just done what, sir? Summation fx0, summation fy0 and summation moment 0 and nothing else. I hope you have understood it. If you have understood, give a thumbs up in the live chat section. If you did not, please ask me your doubt. And please guys, do share this session in all the other people, in all the other Telegram groups, and do join my Telegram channel in case you haven't yet. And definitely, do subscribe to my channel if you are new to my channel. Actually, tomorrow from 10:15 a.m. and also your like 10 and in the evening, it actually from 7:15 p.m. there will be two very important formula revision session. Full formula revision session will be there. Okay, next question is up on your screen. Let's see so that who is going to give the correct answer to me. Next question sir, आपको दिख रहा है the moment at support A. This is support A. Basically they are asking you the moment over there in kilonewton meter. You have to tell me up to 2 decimal place. Okay, up to 2 decimal place. अरे एक साइड का लूंगा ना पवित्र. I am only going to take for one side, right? Okay, Pavitra. If you are analyzing a beam or something like that, you actually are going to take only for one side, right? So on that occasion, if you are neglecting HA, so you also should take into account this one, right? क्या बोलते हैं उसको? The RA also you should have taken. Why didn't you take that also, right? So अच्छा, you are where you are confused. I understood. It's MC0 only, right? I have written summation. That's why I think you got confused. Okay, fine, no problem. So yeah, you understanding now? Suppose you are analyzing a beam at any particular internal hinge. You know the bending moment is 0. That means either left hand moment. Getting my point, right? What I'm trying to say. So let's see that what is the correct answer for this question. Very typical question for your moment distribution method. Very easy, very typical question. I hope you have understood Pavitra KS, right? Clear? Okay. So MF. So after asking question, please respond whether your doubt has been cleared or not, right? Otherwise, बहुत चुभता है अंदर. It gives a lot of discomfort to me actually until unless I could clear the doubt of any person. Okay, तो आप सर देख पा रहे हो सर AB if you talk about it's a continuous beam, right? So if it's a continuous beam, I have always told you what is the basic fund of continuous beam, that consider the intermediate support as the fixed support. Always be very careful. So if you are analyzing this AB part only, sir. Okay, sir. Yes. So MFBA, these two are definitely going to be 0 because there is no load. कोई लोड ही तो नहीं है सर, right? Now if I talk about the BC part, so MFBC if I am doing, sir, तो just analyze it as a simply supported beam subjected to UDL. So what is the fixed end moment, sir? Minus WL square by 12 at this end and plus WL square by 12 at that end. No problem, sir. Okay, minus WL square by 12. So it is coming minus 9. So what about MFCB? That is simply plus 9. Any problem, sir? Please guys let me know in the live chat section, sir. Up to 2 decimal place you have to answer. Already I have received 2 different answers. One is 4.5, one is 2.25. What are the other answers, guys? Please do let me know in the live chat section. What are the other answers? Okay, so this is the joint basically B, right? You are asked to find out MAB, right? If I am not wrong. So let's you can calculate it through different methods. Basically बहुत सारे methods जिसके through आप ये calculate कर सकते हो, but since nothing else is given, so the better option is to use the moment distribution method. Now let's talk about the B. So from B basically there are two members going. One is BA in this side, one is BC in this side, sir. No problem, sir. Okay, Shanawaz, what is the problem? Okay, 2.25. Okay, so tell me what is the relative stiffness of BA and BC? Can you please tell me, sir? Yes, what do you mean by relative stiffness basically, sir? उसमें मतलब कौन सा चीज काम आता है, sir? It is, sir, EI by L and all these things, right? तो it is basically your I by 4. बस इतना लिखो, बाकी सर नहीं लिखना है आपको, right? If I talk about, sir, what is this BC portion or CB portion, sir? इसका क्या हो जाएगा, sir? What is it going to be? I mean like values and all these things.
सर इसमें क्या हो जाएगा एक्चुअली, देखो इट इज ये टोटल सर 1/m/ei मेथड से किया हो, यस यू कैन डू इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू आर डूइंग इट लाइक दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सर, आप कर सकते हो, बिल्कुल बेझिझक करो। ओके फाइन। Now sir, let's understand one particular part over here sir. This is 4 meter, this is what 3 meter, right? तो सर BC में जो आपका स्टिफनेस होगा, हाउ मच इज दैट सर? 3/4 इंटू 2i, यहाँ पे 2i है ना, 2i/3, 2i/3। ओके सर, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली ओके। BC में so what is the total basically stiffness? This is the relative stiffnesses, right? What is the total stiffness? The total stiffness is basically I/4 plus I/2 यानी कि 3i/4। no problem sir। what is the distribution factor sir? So distribution factor is always the stiffness divided by the total stiffness. So distribution factor for BA is I/4 by 3i/4, that is 1/3, and distribution factor for BC is I/2 by 3i/4, that is your 2/3। हो गया सर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्लियर हो गया। अब क्या सर, एकदम मैं कन्वेंशनल मेथड में कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग इट वेरी वेरी कन्वेंशनल। लेट मी जस्ट ऐड अ स्लाइड so that you don't have any problem in any of the question, but my request to all of you people is definitely stay tuned till the end of the session। तो आप B से सर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, 1/3 इधर, 2/3 इधर, ये A है सर, ये C है, नॉर्मल जैसे आप करते हो, राइट? व्हाट इज द लाइक फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ओवर देयर? पहले आप फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखते हो, राइट? 0 BA 0, AB 0, BA 0, BC -9, CB +9, -9 +9, it is 0। no problem sir। okay, next sir, you are coming basically, right? आप बैलेंस कर रहे हो बेसिकली, और कुछ नहीं। सो -9 सर, इसका कैरी ओवर होगा ना सर? इट्स गोइंग टू बी कैरिड ओवर सर, कुछ तो सर होना चाहिए। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी ओवर यार? -4.5। इधर सर कितना होगा? -9। ओके सर, दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है सर? -13.5 0, और इधर सर कितना कितना हो रहा है? 0 0। कैरी ओवर तो डेफिनेटली होगा सर इधर। सर यू डिडंट प्रोवाइड YE, व्हाट इज YE? व्हाट इज YE सर? अरे बताओ, नहीं बताओ तो कैसे चलेगा? फाइन, तो इट इज -4.5 सर, इधर आएगा तो इट्स गोइंग टू बी 4.5, इसका कैरी ओवर होगा इधर, दैट इज योर 2.25, क्योंकि ये जो टोटल -13.5 है, आप समझ रहे हो ना, 1/3 है, ये 2/3 है, तो फिर उस हिसाब से ये जाएगा ना सर। इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट फैशन। इट्स 1/3 इधर जाएगा, 2/3 इधर जा रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर फैशन ओवर देयर सर। Yesterday PDF I will definitely include it in the Telegram channel, so just stay tuned, I will surely upload it by tonight for sure। okay, definitely upload it in by tonight in the Telegram channel, so don't worry about that। okay, so it's 9 हो जाएगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, and if you are just doing it, it is 2.25 हो जा रहा है, कैरी ओवर होके इधर आ गया। so -13.5 एंड 9 मिलके सर हो जाएगा -4.5 हो जाएगा इधर, एंड ये तो सर 0 हो गया, ये 4.5, ओके, एंड इट इज 2.25। हाउ इट इज अनबैलेंस्ड भाई? कैसे अनबैलेंस्ड हो रहा है? हाउ इट इज अनबैलेंस्ड? किधर से अनबैलेंस्ड है? अभी देखिए कमेंट डिलीट करेगा, अब शायद नहीं करेगा क्योंकि मैंने बोल दिया। okay. It's 4.5, it's -4.5, clearly see -13.59। देख रहा हो ना, 1/3 इधर आएगा, इसका 1/3 देखो, -13.5, देखो कमेंट डिलीट हो गया, देखो देख रहे हो, -13.5 आ रहा है ना इधर। अंडरस्टैंड, पहले समझो सर क्या रहे हैं हम, फर्स्ट अंडरस्टैंड। -13.5 इज द टोटल अनबैलेंस्ड मोमेंट, राइट? इसको तुम बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए आपको? -13.5 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? +13.5। इन व्हाट फैशन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सर? 13 + 13.5, उसका 1/3 इधर, 2/3 इधर, नो प्रॉब्लम सर। 1/3 इट हैज कम हियर। नाउ सर A इज अ फिक्स्ड एंड, सो ऑब्वियसली कैरी ओवर होगा, 50% कैरी ओवर, ये सर कैरिड ओवर 2.25, राइट? इधर सर कैरी ओवर होने की जगह है सर, नो कैरी ओवर। वाई सर? इट इज नॉर्मल रोलर सपोर्ट,
right? So no carryover at this end. This ends are no carryover, right? So it's 2.25, 4.5, 4.0. Clear, sir? No confusion, sir. Understandable to all of you? Okay. So the correct answer कितना हुआ sir? Basically 2.25. This is up to 2 decimal place. Next question is up on your screen. Simply supported beam. Okay. Of 16-meter span is traversed by 2-point loads of 10 kilonewton, 20 kilonewton with 10 kilonewton loading. The distance between the loads is 3 meter. Let me know in the right section that what is the correct answer. Okay. अरे राहुल गांधी साहब आ गए. चलो नमस्ते. The maximum BM at center of the beam is how much, sir? Let me know in the right section that what is the correct answer to this question. Very important question, very easy question also from ILD. बस basic concept को touch करके जा रहा हूँ मैं और कुछ touch नहीं कर रहा हूँ. The maximum bending moment at the center of the span is what, sir? Quickly. तो आप लोग sir definitely जानते हो. First see, this is the center of the span, right? Okay. Now tell me, one by one the loads are going like this. Okay, so just when 10 kilonewton load has passed this section, okay, and this is suppose 20 kilonewton, right? Say this is, say any point, say C. That means the load on AC is more than the load on CB, right, sir? Okay. Now sir, when 20 kilonewton load also has crossed the middle point C, on that occasion it's going to be reversed. देखो तो condition क्या है? What is the condition for the maximum bending moment at the center? The condition is, sir, that you are going to place that load on the required section, which on passing is going to create the difference. मतलब sir, say only 10 kilonewton load passed. देखो सर, शुरू में मानो दो लोड इधर है 10-20, ये AC है, ये CB है. स्टिल सर CB इज लाइटर, AC इज हेवियर, राइट? ओके. नाउ सर 10 kilonewton load passed, 20 is still here, right sir? Okay. Hello Ramyashri. But still sir, AC is heavier, CB is lighter. That means no sign change. Yes sir. Okay. After that, when 20 also joined here, now you can see sir the actual scenario changes. The load on AC becomes lighter. So upon passing which load this change occurs? 20 kilonewton वाला लोड को अगर तुम पास कराओगे तब ये चेंज आ रहा है. So this is the critical load, and the condition for maximum bending moment is put the critical load at the required section. यहां पे कौन से सेक्शन बोला है सर? At the center of the beam. तो at the center of the beam में आप critical load यानी कि 20 kilonewton को रख दो. No problem sir. And you keep the next, the forward load basically, that is 10 kilonewton over here. अब सर जैसे bending moment होता है सर, डायग्राम वैसे बनाओ. What is the diagram sir? This is 8. This is sir also 8. 8 है ना सर? 16. तो इधर 8, इधर 8. And this is your 3. That is very very simple diagram. Okay, no confusion over here. Let me know in the light chat section. Everybody understandable to you? अच्छा, first tell me sir, what is the ordinates? ये ordinates कितना कितना होता है? Please guys, anyone tell me what is this ordinate sir? This ordinate आप जानते हो sir? It is the product by the summation. तो ये जो maximum ordinate of the bending moment diagram ILD का जो होता है sir, that is product into the summation. So basically it is your 4, right? If this is 4 sir, right, can you please tell me what is this distance? Okay, ये वाला ordinate कितना होगा sir, बताओगे? Yes, it's very easy. Suppose it is x, so you can easily get it from the क्या बोलते इसको, similar triangles. That's sir x by 5 is equal to 4 by 8. Okay, so x is equal to 2.5 sir, no problem. Okay, ordinates मिल गया. Now you know what is a bending moment sir. It is very simple. That is load into, because this 4 and 2.5 are representing the bending moments if unit load is passing. But here unit load is not passing. What is the load passing sir? 20. So for unit load the bending moment is 4. So for 20 kilonewton load what is the bending moment? This.
For unit load, the bending moment is 2.5, but the load is 10. So what is the bending moment? Okay, so 80 plus 25, sir, that is your 105 kilonewton. Okay. अरे अरे नहीं 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 प्रवीण, आप कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हो. यू आर मिक्सिंग द कॉन्सेप्ट. प्रवीण, हियर द सेंटर, हियर इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. दैट थिंग व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली प्रवीण इज बेसिकली योर, क्या बात है वो, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. कंसेप्ट को मिक्स मत करो. दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. दैट यू डोंट नो वेयर इज द लोकेशन, वो आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है. हियर द लोकेशन इज मेंशन्ड कि सर इस सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है. बी केयरफुल. बार बार यहां पे बहुत सारे गलती होती है सर, बहुत सारे लोगों की, राइट. बी केयरफुल प्रवीण. ओके. A three-hinged arch of span, that is absolute bending moment, absolute, right? A three-hinged arch of span, okay, and span L and rise H carries a uniformly distributed load of W per unit run as shown in the figure. Okay, the horizontal thrust H is going to be how much, sir? मतलब यहाँ पे सर जो भी आपके horizontal thrust वगैरह होगा, what is the value? I hope you have got your mistake, right, Praveen? Am I understandable to you? Please let me know in the live chat section. क्वेश्चन पूछ के प्लीज यार आंसर दिया करो, राइट. बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अदरवाइज मुझे पर्सनली. ओके, सो डेफिनेटली डू गाइज हिट द लाइक बटन वंस एंड शेयर द सेशन विद अदर पीपल. प्लीज डेफिनेटली दिस माई रिक्वेस्ट. इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, जल्दी से जल्दी यार लाइक और शेयर तो बनता है. ओके, आई थिंक कि सर कोई जगह यहाँ पे नहीं है. ओके, लेट्स सी दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देन. तो सर एकदम मतलब क्लियर है काफी, राइट. इट इज लाइक वर्टिकल रिएक्शन से वी ए वी बी एंड दिस इज लाइक एच ए एच बी. इट्स अ वेरी सिमेट्रिकल फिगर सर. ये आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है. इट्स अ सिमेट्रिकल फिगर. इफ इट्स अ सिमेट्रिकल फिगर तो ऑब्वियसली नो वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, राइट. ओके, एंड वी ए प्लस वी बी is equal to the total downward load, that is W into L by 4 plus L by 4, that is L by 2, right. So you have got what is the value of VA or VB because it's symmetrical figure, so it's very evident that you are understanding the point. Okay, so many people are saying option D is correct. Okay, fine, let's see. So it is again, sir, it's a hinge, right? Three hinged arch, so it's an internal hinge, so obviously bending moment of the internal hinge is going to be 0, right? So let's now talk about from any particular side that you choose. For example, you are talking about this side. Okay sir, कोई भी एक side ले लो sir. That is WL by 4 into, what is the distance by the way? This is L by 4, this is L by 4, so it's basically L by 2. ओके, एंटी क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज आएगा सर. क्लॉकवाइज कौन कौन आएगा सर? ये वाला आएगा. ओके, दिस गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, डब्लू क्लॉकवाइज आएगा ना, डब्लू इंटू एल बाई 4 इंटू ये है सर एल बाई 8, इट्स सेंट्रॉइड, प्लस दिस इज एल बाई 4. एल बाई 4 प्लस एल बाई 8 माने कितना होता है? L by 8 plus 2L by 8, 3L by 8. Okay, anyone guys having any problem, please guys let me know in the live chat section. And this is your small h, hb into small h. From here you can definitely get what is the value of hb, right? That is hb into small h. So from here hb सर आपको जो मिल रहा है सर, कितना मिल रहा है सर? बेसिकली WL square by 8 और यहाँ पे 3WL square by 32. तो WL square by 32H. Okay, it's a very easy question by the way sir. It's option D. Just calculate. मतलब बहुत simple है sir. Three hinge arch, especially if the question is given, it's a very simple. Only apply the summation fx or summation fy0, mostly summation fx0, and secondly take the moment in the central hinge. आधा से ज़्यादा question easy दोनों में से solve हो जाता है. Next question is from your building material. Let's see so that who is going to give the correct answer. It's an NAT type question. By the way, many people will definitely ask me regarding the MSQs of structure and this BMC, CPM and all these things. Let me tell you that the MSQ, I have already taken a dedicated session earlier for these two topics only. That's why
I will upload that particular session as well as the PDF of that particular session in my Telegram channel, the link of which I am giving in the chat section. So just join that Telegram channel. I will upload that MSQ for these two topics PDF separately by tonight for sure. Okay, or maybe maximum to maximum tomorrow there is a very important session. Again, let me remind you, 10:15 a.m. full formula revision part 1. All the subjects also are being mentioned right in the Telegram channel. आप जाके देख सकते हो. And sir, also all the topics which will be covered in part 1, which will be covered in part 2, सब कुछ sir separately mentioned है, right? 10:15 a.m. से part 1, 7:15 p.m. से part 2. Let me tell you, let me know sir in the live section. आप लोगों का सर आंसर नहीं मिल रहा है सर, क्या हो गया? I am not getting your answers. Quickly, come on, everybody. What is the correct answer? It's an NAT type question for all of you people. Quickly. Okay. So firstly, sir, question में एकदम clearly sir एक चीज आपको दिख रहा है. What is that? Sir, what is the, देखो 1 and 1/2 3 ये सब आपको डायमेंशन तो दिया हुआ है ना सर, 30 सेंटीमीटर whatever is like, it is already given to you, right? A wall 1 and the brick thick 30 centimeter, nominal thickness of 20 meter length. So basically the total volume of the wall is given. So 20 meter length, 5 meter height, this meter thickness, सब कुछ सर दिया तो हुआ है, right? So basically it is 100 into 30 meter cube. This is the volume. Okay. Now they have given sir mortar joint of 1 centimeter thickness, right? So can you please tell me what is the actual thickness of the wall? Okay. Okay. Actual thickness of the wall. I will share that video. Preeti Ranjan, yeah, in my Telegram channel for sure. Actual thickness basically of the wall only, matlab except mortar. How much sir? It is the nominal. Nominal is your 30 centimeter. That means that is including the brick plus mortar. So what is basically the thickness of the brick? There is a brick only. 1 centimeter mortar में चला गया. So it is 0.29 meter. That is the actual thickness of the wall, right? So can you please guys tell me what is the actual volume of the wall? So 20 into 5 into 0.29, that is 29 meter cube, right? Okay. Please guys let me know that standard brick size is given to you, right? Okay. So standard brick size, okay. Number of standard bricks actually sir कितना हो जाएगा? Guys tell me, this is the total volume 29 meter cube, right? What is brick size? 1 second please. 1 second, just coming in a second. Yeah, am I audible and visible both? Okay. So what is the size of one brick sir? 20 10 10, right? यही होता है normally. 0.2 including the mortar. So it is coming sir as 29 by 0.2 0.1 0.1. So it is coming basically your 14,500. This is the total number of bricks required, right? But they did not ask you that. They are asking calculate the number of bricks required per cubic meter. Per cubic meter of construction, how many bricks are required? Very important question. This is the total number of bricks required. What is the total volume of the construction, sir? Sorry, 14,500 meter cube. Okay, what is the like construction volume? Getting my point? So basically for constructing 30 meter cube of whatever wall, you require 14,500 number of bricks. Therefore for constructing 1 meter cube of the wall, how many bricks you require? Let me know in the live chat section sir whether you are understanding this. बहुत अच्छा question है sir. It is coming 483.33. that means 484 bricks you require. Sorry to those people who are right answering क्या 500 14,500 and all these things. Okay, question समझ में आया sir?
This 30 meter cube is what? This is the total volume of the work, which is including brick plus mortar, right? Mortar is 1 centimeter thick. So what is the thickness of the brick wall only? The brick part. सिर्फ brick part का volume है 29 meter cube. सिर्फ एक brick का volume है this. So this is the number of bricks total required, right? For constructing 30 meter cube of wall. तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल कंस्ट्रक्ट करने में कितने सारे ब्रिक चाहिए? 484. एवरीबॉडी, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज. लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यस और नो. जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देना इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यस और नो गाइस. ओके, डिवाइड बाय 29 क्यों होगा सर? क्यों होगा डिवाइड बाय 29 करने से कोई मतलब है? डिवाइड बाय 29 तो सेम रिजल्ट आएगा सर. तुम 29 मीटर क्यूब वॉल बना रहे हो या फिर 30 मीटर क्यूब बना रहे हो? यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? पर क्यूबिक मीटर नॉमिनल. पर क्यूबिक मीटर नॉमिनल लिखा हुआ है. पर क्यूबिक मीटर ब्रिक लिखा हुआ है क्या? 30 सेंटीमीटर नॉमिनल. नॉमिनल का मतलब क्या होता है? दैट इज इंक्लूडिंग द मोटार. मोटार को इंक्लूड करते हुए 30 सेंटीमीटर. पर क्यूबिक मीटर नॉमिनल. पर क्यूबिक मीटर मोटार को इंक्लूड करते हुए. अंडरस्टैंडिंग? लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन. यहीं पे सर कटता है, इसीलिए 500 आंसर दोगे तो 0 मिलेगा. बी केयरफुल. अंडरस्टूड जयराम चौधरी. A machine costs rupees 16,000 by constant rate of declining balance method of depreciation. Its salvage value after an expected life of 3 years is rupees 2,000. The rate of depreciation is. Quickly, जल्दी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना whether you have understood the question, yes or no. जयराम चौधरी. Okay, quickly. तो rate of depreciation, it's a 1 mark question, very easy question sir. 1 mark question है sir. Okay, तो I want all of you people to quickly answer the question actually. Quickly, जल्दी से जल्दी sir. Okay, I don't want this many time actually to be wasted. Quickly. Okay, so it's a very easy question. I think all of you people know rate of depreciation as per the declining balance method sir क्या होता है? What is the formula? So the formula is very easy. It is that 1 minus the salvage value by the initial cost to the power 1 by n. This is the rate of depreciation as per the declining balance method of depreciation. There are different methods of depreciation, right? Like क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन मेथड, like बहुत सारे और भी सारे मेथड है सर. हम नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. 2000 by 16,000 to the power how many years sir? 3 years. So it's 1 minus 1 by 8. So it's basically 1 minus half, that is half. So it's 0.5 is the rate of depreciation. Understanding what I'm trying to say? Let me know in the live chat section. If suppose they are asking you the same question. Okay sir, यहाँ पे क्या होता है देखो, फर्क समझो. What is the difference between the linear method and this? In case of linear method, the rate does not remain constant. The rate of depreciation is not constant over there. The amount of depreciation is constant over there. That okay fine, every year the value is say decreasing by 2,000 rupees. Say I bought a phone for say rupees say 1 lakh rupees. Okay, and say after 5 years its value is going to be say 20,000 rupees. That means what is the depreciation per year? Sir, 16,000 rupees. Total depreciation is 80,000 over 5 years. So depreciation per year is sir 16,000 rupees, right? Understanding? That is your straight line method. Okay, there the rate is not constant, the amount is constant. And in this declining balance method, the rate is constant, not the amount. Clear? Understanding? Okay, next question is up on your screen. Let me know in the live chat section so that what is the correct answer to this question. Okay, above graph shows the rate of hydration of pure cement compound C4A, C3A, C2A, C3A. Curve 1 shows what? Okay, let me know in the live section. So this is the curve 1. These are basically the Bogue compounds, what they are popularly known as. So this one, let me just zoom it to you. 1 2 3 4 all are given to you. So basically they are asking you that which one is referring to this one. Basically it's fraction hydrated and this is log time days. So basically it is talking about the rate of hydration type of curve के साथ ये relation है इसका. भाई लाइक कहाँ है? सेशन अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो. ओके, so let me know in the lecture section so that what is the correct answer. And definitely if you are new to my channel, subscribe to my channel, otherwise you cannot be able to participate tomorrow in the marathon formula revision before gate 2022 जो पार्ट 1 पार्ट 2 में होने वाला है. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा देना, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट टुमारो. लेट्स सी सर दैट हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर सर. तो ये क्या होगा सर, सबसे कम है ना सर. लुक, इट इज हैविंग द लोएस्ट हाइड्रेशन, lowest rate of hydration, it's obviously C2S. I would like to know the 2, 3, 4 also. I would like to make it an MSQ type of question कि सर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू आंसर ऑल ऑफ देम. मुझे सिर्फ एक से मेरा भूख नहीं मिटने वाला है सर. आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम. 1 इज C2S, सबको पता है सर. ऑब्वियसली C2S इज having a lowest rate of reaction, so it's going to have a lowest hydration fraction over a certain period of time. But I want 2, 3, 4. तो बताओ मुझे 2 में क्या है, ABC में से क्या है, 3 में out of ABC what ABCD what is there, and in 4 also out of ABCD what is there. You have to answer me quickly. Let me know in the live section quickly sir, what is there in 2 sir. 2 में क्या है सर. 2 में बोल रहे कोई A है, absolutely correct sir. 2 is C4AF, absolutely correct. That is your A, right? So 2 में है A बिल्कुल, because we know C4F has the highest rate of hydration among all the both compounds. What about 3 sir? 3 में क्या है सर. 3 में कोई बोल रहा है B है. B मतलब सर C3S. 3 में absolutely correct sir, absolutely correct. This is C3S, C2S, C3A and at the top C4AF. So 3 में जो है basically that is your B. क्लियर हो गया सर. एवरीबॉडी क्लियर अबाउट ऑल द कंपाउंड्स. लेट मी नो इन द लाइव चैट सेक्शन. C3A दैट इज योर ऑप्शन डी. आई होप सबको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप ऑन योर स्क्रीन. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन लिटरली. ओके, लेट्स सी दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके सर, ये सर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है सर ओवर हियर. So it's a graph which is showing percentage of strength and height by lateral dimension, which is basically known as kind of a slenderness ratio type of thing basically. तो ये आपको सर यहाँ पे शो किया गया है, percentage of strength and height by lateral dimension. Okay, they are saying above graph shows influence ratio of height to lateral dimension on the compressive strength of cube specimen and cylindrical specimen. Which of the following statements are true? It's a kind of an MSQ, I would say. If height to side ratio is changed, the compressive strength of the, देखो इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है सर. ओके, ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी दिस. यही लेवल का क्वेश्चन आएगा. तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू entice my viewers by just giving some freaky questions which are not going to come. Okay, so if height to side ratio is changed, the compressive strength of the prisms related to cube strength changes. Okay, if height to side ratio is changed, the compressive strength of the prisms relative to cube strength changes. Obviously sir, change तो सर होगा ही, obvious बात है सर. One second, yeah. If size of cube is decreased, the compressive strength tends to increase, whereas modulus of elasticity decreases. ऐसे लिखा हुआ है सर. It is also sir absolutely correct. ये जो सर चीजें है, size of the cube is decreased, साइज को जब कम कर दोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंड्स टू इंक्रीज. वाई सर, लोड बाय एरिया सर. अगर सर उतना ही चीज ज्यादा उतना ही लोड को सर कैरी कर पा रहा है, छोटा सा एक सरफेस है तो ऑब्वियसली मेरा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड ओवर देयर, whereas मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सर दैट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कर्व ए, ये जो कर्व है सर जो कि एकदम वर्टिकली नीचे आ रहा है, दैट इज शोज क्यूब स्पेसिमेन. एंड कर्व बी, it is basically showing you cylindrical specimen. ये ऐसे ये कह रहा है. So basically this is wrong. ये उल्टा है. Curve A basically shows you the cylindrical specimen. Curve A ये जो drastically fall होता है, kind of linear behavior show करता है, that is shown by cylindrical specimen. And kind of a non-linear and much lesser, this particular thing is being shown by your cubic specimen over here. So B is basically your cubic specimen. So only 1 and 2 are here. Be very careful this kind of questions actually, right? आप जानते हो सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कॉलम जो हम बनाते हैं वो हम सिलिंड्रिकल प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं सर?
वाई? आप देखना सर, जितने बड़े बड़े पुराने बिल्डिंग है बहुत, सब में सर सिलिंड्रिकल कॉलम लगा हुआ है, बिकॉज दे आर एक्चुअली अ बेटर इन टर्म्स ऑफ योर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स ड्यू टू द स्लेंडरनेस रेशियो फैक्टर सर. राइट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्मूला सोचना एक बार, उसमें क्या मतलब असर है एक्चुअली स्लेंडरनेस रेशियो का, जरा सोचना एक बार. स्लेंडरनेस रेशियो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था एक्चुअली, उसके साथ एक बार ई का रिलेशन जो मैंने पढ़ाया था वो सोचना एक बार. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो एंड योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या रिलेशन बताया था, एक बार फॉर्मूला रिकॉल करना, आंसर अपने आप आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप ऑन योर स्क्रीन, देवलीना. यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टील के कॉन्सेप्ट ही सोच रहा हूँ ना, जो मैंने ऑयलर्स बकलिंग लोड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा ये. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉनिफर्स आर एंडोजेनस ट्रीज, ग्रो आउटवर्ड्स, हैव पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स. ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स 1 and 2 are correct, 2 and 3 are correct, 1 2 3 incorrect and why? ओके सर, पैसा पैसा सर. ओके सर, पहली बात है कि उतना ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ रहा ना राजाशेखर. आप कभी देखे हो कि पहले के बिल्डिंग देखो सर, पहले जहां पे सर सर्कुलर कॉलम्स लगा होता था, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितना होता था सर, 10-10 मीटर. हाँ भाई, पुराने उतने जमाने की बिल्डिंग है. अब एक बिल्डिंग से कितना है, 3 मीटर 4 मीटर मैक्सिमम. तो उतना लोड ही नहीं है, तो काम का क्यों. गेटिंग माई पॉइंट. और भी सर कुछ और भी फैक्टर्स है उसके वजह से किया है. दैट इज लाइक आप एक बार शियर स्ट्रेस वाला फैक्टर भी सोच के देखना सर. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है वो भी एक बार सोच के देखना जरूर. सो डेफिनेटली यू हैव चोजन देयर योर फेवरेट आंसर. एक में 3/2 टाउ एवरेज, एक में 4/3 टाउ एवरेज. सोच के देखना. ओके. आर एंडोजेनस ट्रीज ग्रो आउटवर्ड्स, आई हैव पॉइंटेड लाइक दिस. डेफिनेटली आप लोगों ने सरकारी ऑप्शन चूज कर लिया, दैट इज योर ऑप्शन सी. बट डेफिनेटली सर, yes, this is also one of the reasons, Mohammed Shahnawaz. तो yes, this is not C basically. Conifers जो होते हैं, जो coniferous trees होते हैं, they are basically your not endogenous trees, they are exogenous trees over there, right? Understanding. So this is basically wrong. Exogenous trees होता है वो, they grow outwards. Exogenous है तभी ना सर. देखो ये दोनों सर बेसिकली क्या कर रही है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. कम से कम यहाँ से तो कम से कम यार समझ जाओ. These 1 and 2 are contradictory statements. So how both of them can be correct? You tell me. If either sir it is 1 and 3 are correct, or sir 2 and 3 are correct. 1 and 2 cannot be correct. It is saying endogenous and it is saying grow outwards. How they both can be correct? थोड़ा common sense लगाओ भाई. 2 and 3 are correct, right sir? They grow outwards basically. कोई भी conifer tree के बारे में सोचो सर, वो सोचो सर ऐसे जाता है या फिर ऐसा. Clear. Next question sir is up on your screen. इट्स बेसिकली, देखो सर ये मैसेज डिलीट करने वाली है, ठीक है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन योर लाइक क्या बोलते इसको, they are saying that which of these pairs are correctly matched. So kind of an MSQ question I would say, kind of an MSQ question I would say sir. तो आपको बस बताना है कि 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 something like that. You have to answer me basically. Absorption and क्या सर, and क्या है लिखा नहीं हुआ है, फाइन. तो इफेक्ट मिक्स प्रोपोर्शन सरफेस मॉइस्चर, अच्छा एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर, शायद एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर इफेक्ट मिक्स प्रोपोर्शन. हाँ, सरफेस मॉइस्चर यहाँ पे आना था, आई थिंक दे हैव मिस्टेक. फाइन. पार्टिकल साइज अफेक्ट्स वर्केबिलिटी, ग्रेडिंग मैक्सिमाइजेस सीमेंट. अच्छा, बल्क डेंसिटी सिग्निफिकेंस फॉर स्टेबिलिटी. ओके, लेट्स सी दैट हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर मी. ओके, तो ये दोनों तो सर मुझे समझ में आ रहा है. एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर दे अफेक्ट मिक्स प्रोपोर्शन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड पार्टिकल साइज इज अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, दैट इज आल्सो. बट ग्रेडिंग मैक्सिमाइजेस सीमेंट सरफेस एरिया तो नहीं होता ना. मतलब ग्रेडिंग जितना सर अच्छा होता है सर, उसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बट उसमें मैक्सिमाइजेस सीमेंट नहीं सर, राइट. सीमेंट बढ़ जाता है क्या उससे, या फिर छोटे छोटे जो एग्रीगेट्स है सर वो बढ़ जाता है ना. अंडरस्टैंडिंग. सीमेंट तो सर नहीं बढ़ता है उसमें, सीमेंट घट जाता है, राइट, प्रोपोर्शनेट जो है कंपैरेटिवली, क्योंकि डिफरेंट साइजेस ऑफ जो एग्रीगेट्स है, जो पार्टिकल्स है, वो वहां पे आ जाता है. कोई बोल रहा है बी, बी कहां से आ रहा है सर, व्हाट इज बी? ऑप्शन आपको देना है सर 1 2 3 4 2 3 4 समथिंग लाइक दैट. ग्रेडिंग मैक्सिमाइज सीमेंट नहीं होता है. एंड बल्क डेंसिटी इज नॉट सिग्निफिकेंस फॉर स्टेबिलिटी. बल्क डेंसिटी के साथ स्टेबिलिटी की क्या कनेक्शन है सर, राइट. दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी, एग्रीगेट वगैरह के साथ कनेक्शन है सर. नो, सो इट्स बेसिकली 1 and 2. वाटर सीमेंट रेशियो अगर होता सर, देन आई वुड हैव told that this is going to be talking about the stability, but I think it's 1 and 2.
सो ज्यादा सर बड़ा नहीं करूंगा क्वेश्चन को, सेशन को, क्योंकि द MSQ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सेपरेटली इन माय टेलीग्राम चैनल, दैट्स व्हाई। और सर ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपके। ओके, आई वांट द होमवर्क आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो अलोंग विथ द रेटिंग, बिकॉज दिस इज अ लास्ट सेशन फॉर दिस सीरीज, इसलिए मैं एक रेटिंग आप लोगों से मांग रहा हूं इन द कमेंट सेक्शन, जरूर with the homework answer. Definitely, it's a very easy question. I want all of you people to answer this question. Okay, chalo, thank you for being here for this particular thing. Meeting you tomorrow at 10:15 at 10:15 a.m. and 7:15 p.m. respectively, with the most important formulas, basically the full formula revision, in fact. For the things, the links and PDFs, everything will be available in my Telegram channel, the link of which is uploaded over here. आज ये सीरीज का दी एंड है बेसिकली। आई होप यू हैव डेफिनेटली एंजॉयड दिस सीरीज थ्रू आउट। जो लोग अभी तक इस सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देख चुके, सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, सो डेफिनेटली आप लोग देखना। होमवर्क आंसर के साथ जरूर मुझे आंसर देना। थैंक यू, बाय बाय गाइस, मीटिंग यू टुमारो एट 10:15 AM। बाय, थैंक यू, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ना, एंड डेफिनेटली मीटिंग यू टुमारो। थैंक यू। और PDF और वो MSQ वाला चीज जो है वो मैं जरूर आज डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू।